सरपंच को हाई कोर्ट क्यों बना रहे हो? किस अधिकार? मैं उनको कौन से प्रोविजन में कहूँ कि अच्छा भला केस जिसमें आप कह सकते थे कि हम दूसरी पिटीशन फाइल कर देंगे, आपने ऐसी तैसी करा ली। इस कॉलोनी में ओपन पार्क के एक हिस्से में एक सहायरा वृद्धाश्रम संचालित है। नहीं 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 क्या नहीं 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 नहीं? मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में, कहते नहीं 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 नहीं। क्या मजाक है यार? पकड़ में आ गया, आप तो खुद ही उस जमीन के ऊपर कब्जा किए बैठे हो। अगर पता चल गया कि नहीं आपका स्टेटमेंट गलत था, तो सत्यम जी, once you have become a party voluntarily, then be ready for all the adverse consequences. डिमार्केशन में अगर आ गया फिर क्या होगा सर? फिर आपको जबरदस्ती माफी मांगनी पड़ेगी। तो एक लॉयर को ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं लाने देना चाहता। आप किस प्रोविजन में आपने रिप्रेजेंटेशन किया था? In fact, representation is being made, Marit, that they are making encroachment, not in. Under which provision of law? It's a representation is not in any provision, Marit. तो फिर मैं कैसे उसको डायरेक्ट कर डिसाइड करने का डायरेक्शन दे दूं? उनको किसी स्टैट्यूटरी राइट के लिए ही तो डायरेक्शन दे सकता हूँ ना सर। It is not there. सरपंच और सचिव को मैं किस अधिकारों का या कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्देश दूं? Even Marit, to the revenue officer also. रेवेन्यू भाई कोई किसी प्रोविजन में लगाओ तब तो हम, या बता दो ना, हम उसको ट्रीट करवा देंगे, वैसे कोई इशू नहीं है। In fact, if it has been there, Marit, 250 is there where it in illegal encroachment. आदमियों के खिलाफ फाइल करो जो एंक्रोचमेंट कर रहे हैं। The problem there with the petitioner would be, Marit, he is not an owner of the land that is there in open land. I am one of the plot owner of the colony, Marit. For that particular property on which they are making encroachment, I am not owner of that land. That is an issue, Marit. That I have a vested right over. फिर आपने वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजमेंट्स नहीं देखे कि that the land which is reserved for park purposes cannot be utilized for any other purpose? Yes, Your Lordship. तो उस तरीके से पिटीशन क्यों नहीं फाइल की? In fact, that we have effectively in representation we have stated उस तरीके से पिटीशन क्यों नहीं फाइल की? जो काम हमें करना है वो सरपंच को आप डेलीगेट करवा रहे हो। Mal. क्या हम पार्क पे एंक्रोचमेंट रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लाइट में एम्पावर्ड है कि नहीं सर? फिर आप हमारे पास आने के बजाय सरपंच के पास हमारे अधिकार क्षेत्रों के पालन हेतु हमसे निर्देश चाहते हैं सर। In fact, we have initiated the action on the ground. क्या कोई जजमेंट नहीं है कि भी पार्क की जमीन को कैनॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर पर्पस? There is, in fact, I have a limited vested right to use that particular property. No, that is fine. Mal. You are a resident of that colony. Mal. By virtue of that your residence, you have some right to enjoy the park, which was earmarked for park purposes, right? Mal. Now the use is being diverted by anybody, whether by the colonizer or it must be at the behest of colonizer only. Then you can always approach this court. ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स नहीं देखे आपने? फिर आप सरपंच को हाई कोर्ट क्यों बना रहे हो? किस अधिकार? मैं उनको कौन से प्रोविजन में कहूं कि आप 226 का पावर एक्सरसाइज करो? नहीं, 226 का पावर था। आप ग्राम पंचायत में मैं कौन से सेक्शन में उनको कहूं कि आप पावर एक्सरसाइज करो? मैं रिप्रेजेंटेशन वही तक डिसाइड करने का डायरेक्शन दूंगा जब तक कि वो स्टैट्यूटरी ना हो। राह चलते कोई भी रिप्रेजेंटेशन को हम नहीं डायरेक्शन देंगे डिसाइड करने के लिए। स्टैट्यूटरी है, फाइन, नो प्रॉब्लम। My submission is more particularly since representation has been made. 6048/2024, this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. The only contention of the petitioner is that he has made certain representations to the Sarpanch, Public Secretary of Gram Panchayat Palari Chidiya, bracket में Duda Sivni, Tehsil and District Sivni, against the encroachment on the land which was earmarked for park in the layout. किस पे हुआ था सर? लेआउट में क्या है? लेआउट में in the layout, but no action is being taken by the Sarpanch as well as the Secretary of Gram Panchayat. Counsel for the petitioner was directed to point out the power under which the section under which the Sarpanch oblique Secretary of Gram Panchayat so and so Duda Sivni, Gram Palari bracket में Duda Sivni can stop the
so-called encroachment on the land reserved for park purposes. The counsel for the petitioner could not point out any provision under any statute. Thus, if the representation is non-statutory in nature, then this court cannot direct the authorities to decide the same. Accordingly, no case is made out warranting interference. The petition fails and is hereby dismissed. अच्छा भला केस जिसमें आप कह सकते थे कि हम दूसरी पिटीशन फाइल कर देंगे, आपने ऐसी तैसी करा ली। इनफैक्ट मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं? मैं आपको सारी सलाह दे दी गई, उसके बावजूद भी आप अपने पे स्टिक रहे तो रहिए। नहीं मैं स्ट्रिक्ट नहीं था। व्हाट कोई बात, हो गया। आई वाज सबमिटिंग सम। अरे हो गया। मतलब आपको मेरा क्वेश्चन दीजिए, आप रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के लिए आए थे, आप प्रोविजन बता दीजिए। नहीं है नॉन स्टैट्यूटरी रिप्रेजेंटेशन, आई विल नॉट डिसाइड, आई विल नॉट डायरेक्ट टू डिसाइड इट, दैट इज ऑल। मतलब सिर्फ एक सबमिशन करना चाहूंगा। इनफैक्ट नॉट वी हैव मेड रिप्रेजेंटेशन टू द कलेक्टर आल्सो मालिक, कलेक्टर एज वेल एज। बता दीजिए ना, कलेक्टर के पास बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट टू रेवेन्यू अथॉरिटी। अरे मेरे भाई सबके ऑर्डर्स थाना प्रभारी के बताइए। चलिए अब आपको एक एक चीज के देना है ना। आइए, थाना प्रभारी को एंक्रोचमेंट रोकने का कहाँ से अधिकार है? वो तो न्यूसेंस में कर सकते हैं 133। न्यूसेंस में करेंगे। आपने जाके हंगामा मचाया क्या वहां पे वकील साहब? नहीं वकील साहब मतलब जो कंप्लेनेंट है वो वकील साहब है, उनके लिए कह रहा हूँ। मालिक तो जब आप हंगामा मचा ही नहीं रहे अच्छे नागरिक होने के तो न्यूसेंस की कौन सी बात हो गई? But he is creating nuisance towards है? private respondent। कहाँ लिखा है कि आप गए थे मना करने तो आपके साथ गाली गलौज हुई? बता दीजिए। बता दीजिए ना सर, न्यूसेंस नाम लेने से मतलब क्या होता है ये भी तो बताइए। सत्यम जी, न्यूसेंस नाम ले लेने से न्यूसेंस हो जाता है क्या? मतलब इनफैक्ट he is using public property without any authority। पब्लिक प्रॉपर्टी? कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी भाई? ये क्या सरकारी कॉलोनी है? नहीं बट that belongs to not an individual, rather all the resident of the colony। जब मैं आपको मैंने बता दिया था कि आपको कौन सी पिटीशन फाइल करनी है, still you did not point it out. Similarly, the counsel for petitioner also could not point out the provision of law under which the collector can stop the construction over the land which according to the petitioner was reserved for park purposes. Police system. Furthermore, it is clear from one of the representation that one Sahara old home is operative in one portion of the open park. If आप समझ में आया कि आप पिटीशन क्यों नहीं लगाना चाहते? आप समझ में आया कि आप पिटीशन क्यों नहीं लगाना चाहते? क्योंकि आपका भी ये उड़ जाएगा। ये ओल्ड होम कौन चला रहा है सर? नहीं वो हमारा तो हमारे प्लॉट पे है, आपके प्लॉट पे है। यस योर लॉर्डशिप। ओल्ड होम आप चला रहे हैं? वो दैट इज ओल्ड होम आप चला रहे हैं? मालिक यस। इस कॉलोनी में ओपन पार्क के एक हिस्से में एक सहायरा वृद्धाश्रम संचालित है। नहीं क्या नहीं? ऑन मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में, कहते नहीं। क्या मजाक है यार? मुझे कैसे पता चल गया कि एक ओल्ड होम चल रहा है वहां पे? इनफैक्ट दैट इज मुझे इनफैक्ट नहीं पता। आपकी इसमें रिप्रेजेंटेशन में लिखा है मालिक। चलिए सर हटाइए उसको। अब वो 45 वृद्ध जन रह रहे हैं तो इसलिए मैं हटवा नहीं रहा हूँ आपको। मालिक आपका तो पूरा वेस्टेड इंटरेस्ट पे है। फिर नहीं मालिक रुक जाओ मुझे नहीं व्हाट no you have invited trouble for yourself। no just a minute, this petition under article 226 my submission is valid। place Mr. now मैं बता दीजिए, फिर मैं जब ऑर्डर शुरू कर दूंगा तो then I will not hear I will not like any interference। yes बताइए क्या कहना है, बताइए क्या कहना है सर, बताइए क्या कहना है, बोल तो दीजिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑर्डर लिखाने से पहले आपको जो बोलना बोल दीजिए। कर दें आप ऑर्डर जो भी। This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed, seeking the following relief. It is submitted by counsel for petitioner that the respondent number 5 is raising a construction. ये कौन है सर? पप्पू सोनी? He is the person who is making construction। That respondent number 5 is raising certain construction over a part of the open land which is reserved for park purposes. कहाँ है सर लेआउट में पार्क? पेज नंबर 11 में काइंडली दीजिए। बाय रेफरिंग टू कहाँ लिखा है पार्क? ओपन पार्क मालिक लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम टॉप पे। टॉप बाय रेफरिंग टू
page 11, which is the layout, it is submitted that the area which is on the extreme top of the left of layout has been reserved for open path. However, never. Since the respondent number 5 is, अच्छा सर, ये नंबर 5 जो है ये रिटायर्ड कांस्टेबल है ना? है सर? मालूम। सही बात है? यस सर। अच्छी बात है सर। P2 पे आ जाइए। अब क्या लिखा है आपने? आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रखा है और आपने P2 पे क्या लिखा हुआ है? रिस्पोंडेंट नंबर 5 कौन है सर? P2 इज जो जन आकांक्षा सुशासन की एक पहल, जहां पे आपने शायद कोई कंप्लेंट की है। जी। सब्जेक्ट देखिए सर, पेज नंबर 12 पे। रिस्पोंडेंट नंबर 5 को किस पद से आपने एड्रेस किया है? मालूम। वो कॉस्ट टाइटल में क्यों नहीं है? जो भी आपने अपनी शिकायत में लिखा है वो कॉस्ट टाइटल में क्यों नहीं है? हालांकि रिप्रेजेंटेशन में वो है, पेज नंबर 15 में भी है वो चीज। पेज नंबर 15 पे भी है, है। फिर आपकी कॉस्ट टाइटल में क्यों नहीं है? कॉस्ट टाइटल में क्यों नहीं है सर? नहीं। हम कई चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं तो आप कहते हैं नहीं, हमारी तो एक एक गलतियों को पकड़ पकड़ के आप उसको हाईलाइट करिए, तो हम करते हैं। शांति रखो। मुझे उसी समय शक पड़ गया था कि सत्यम जी को ये बताने के बावजूद भी कि आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली हाई कोर्ट में, वो रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? सुनिए, ऑर्डर हो जाने के बावजूद भी जब आप उस रिक्वेस्ट पे वापस नहीं आए तो हमने फिर तुरंत पकड़ ढूंढना शुरू कर दिया कि ये गलती कहाँ है। पकड़ में आ गया, आप तो खुद ही उस जमीन के ऊपर कब्जा किए बैठे हो। आप तो खुद ही उस जमीन पे कब्जा किए हुए हो। सत्यम जी, लॉयर्स के रिएक्शन से समझ में आ जाता है कि केस में गड़बड़ी है, फिर आप कहते हैं पकड़ते कैसे हो? ऐसे पकड़ते हैं। सत्यम जी को कानून बताने के बावजूद भी, जो कि उनको खुद मालूम है, और वो उस ग्राउंड पे उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए मतलब गड़बड़ तो है। सेकिंग दी फॉलोइंग रिलीफ पूरा अच्छे से लिखो आपको। सेकिंग दी फॉलोइंग रिलीफ, इट इज, अच्छा वो हो गया ना, एक्सट्रीम राइट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द, है ना, ओपन फॉर दिस इज, it is submitted that the respondent number 5, who is a retired constable, is raising construction on the pretext that the construction is being raised by the Gram Panchayat. But the petitioner has a suspicion about the correctness of the information given by the respondent number 5. Therefore, the petitioner has made a representation to the Sarpanch / Secretary Gram Panchayat Palari Chidiya (bracket में Guda Sevni), as well as to Collector Sevni, to stop the construction, but no action has been taken. Accordingly, accordingly, it is spread that the collector's evening, Sarpanch / Secretary of Gram Panchayat Palari Chidiya (bracket में Duda Sevni) may be directed to decide the representation. The counsel for the petitioner was apprised of the fact that our land, which is reserved for park in a layout, cannot be utilized for any other purpose, then we should have filed a petition
then why he has not filed a petition for stopping the respondent number 5 to raise any construction in an area which is reserved for open park, and why he is seeking direction for the Sarpanch oblique secretary of Gram Panchayat Palari Chidiya, bracket में Duda Nivasi, Duda Sevne, as well as Collector Sevne. But the counsel for the petitioner stuck to his prayer that the representation may be directed to be decided by the aforesaid authorities. Accordingly, the counsel for petitioner was directed to point out the statutory provision of law under which such a representation can be said to be maintainable. However, the counsel for petitioner could not point out, however, counsel for the petitioner clearly submitted that there is no provision of law under which the Sarpanch oblique secretary can stop the construction. The Sarpanch secretary as well as the collector can stop the construction. Let's start. The next question for consideration is that when the petitioner could have approached this court directly for stopping the construction in the open area which is earmarked for park, then why he has filed the present petition in the present form? In the representation which has been filed as annexure at page 14 of the petition, this has filed as annexure P4 and is at page 14 of the representation. The petitioner has specifically stated that in one part of the land which is reserved for open area, one Sahara old home is in operation in which 45 old persons are residing who are using the open park for their recreational activities. Accordingly, the counsel for petitioner was directed to point out as to whether the petitioner has constructed and is operating Sahara old age home or not. It was fairly considered by counsel for petitioner that the petitioner is the owner and is operating Sahara old age home. But at the first instance, it is submitted by Shri Satyam Agarwal that the old age home is situated on the land belonging to the petitioner. But once thereafter, this court invited the attention of Shri Satyam Agarwal to the representation made by the petitioner and other persons, alleging specifically that Sahara old age home is operative in a part of the land which is reserved for open park. Then this court could not get any answer from the counsel for the petitioner. That was the reason why the petitioner was not intending to file a writ petition for removal of all the encroachments from the area which is reserved for open park, because the petitioner himself has encroached upon an area which is reserved for open park system. Furthermore, in the cause title, the petitioner has described the respondent number 5 as a retired constable. However, in a complaint which has been filed as annexure P2 and is at page 12, the respondent number 5 has been described as city president of BJP. Even in a representation annexure P4, which is at page 15, the respondent number 5 has been described as BJP city president. Why the petitioner has given an incorrect description of respondent number 5 in the cause title is also not clear. Thus, it is clear that this petition has been filed with oblique motives. And in fact, the petitioner himself has encroached upon the land which is reserved for open park purposes. Under these circumstances, the collector Sydney is directed to immediately remove the construction which has been raised by the petitioner in the open park, and where he is running
an old age home in the name of Sahara Old Age Home, and we shall also make alternative arrangements for the persons who are residing in the old age home. Police stop. With the aforesaid direction, the petition is finally disposed of. The collector Sivni is directed to submit his report within before the registry of this court within a period of 1 month from today. Okay. Now, only thing which Malit has directed, I have no objection with that. In fact, I bow down to that observation. The thing which has been stated, if Malit must see, that is that park has been used as a park by these persons. This has been mentioned in the representation, Malit. उस पे कोई construction नहीं है, direction आपने pass कर दिया. अच्छी बात. There is no construction on that. कोई बात नहीं. वो representation में नहीं लिखा है. I know the even plot number. That is why I have no objection. आपने old age home बनाया है. सत्यम जी ने old age home बनाया है. Malit. सत्यम जी आप ओनर हो क्या? नहीं, आप नहीं हो ना? नहीं. आप वो ऐड क्यों कर रहे हो चीजें जो आपके ओरिजिनल ओनर ने नहीं लिखी हैं? वो ये लिखता कि उस पार्क को वहां के रहवासी यूज कर रहे हैं तो समझ में आता. आपके प्लॉट में ओल्ड एज होम बना हुआ है तो क्या उस जगह के रहवासी नहीं कहलाएंगे वो? आपने लिखा है कि पार्क के हिस्से में सहारा वृद्धाश्रम संचालित है, स्पेसिफिक एडमिशन है, or you want to add and subtract the words whereas you don't have any personal knowledge. अरे मान लीजिए आपके प्लॉट के ऊपर वो चल रहा है तो क्या वो इलाके के रहवासी नहीं रहेंगे? वृद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है. दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है. ये क्यों लिखा कि एक हिस्से में सहारा वृद्धाश्रम संचालित है? अब सत्यम अग्रवाल जी अब उसमें ऐड कर रहे हैं. And he wants to become a party. Where have you mentioned in your writ petition that although it is mentioned in the representation, but in fact it is constructed over the land belonging to you? Please point it out from the writ petition, sir. This is the representation filed by you. Well, this is a part of the writ petition. Where have you made a pleading that by mistake incorrect description was given in the representation, but the old age home has been constructed over your land? And no part of the park has been enclosed by you. बताइए सर. आप unnecessarily उसको ऐड कर रहे हो. Why you want to become a party to the litigation? I don't want to. Then don't become a party. अगर आप पर्सनली आप जानते हैं, आपने विजिट किया हुआ, आपने देखा हुआ, then become a party. क्योंकि अगर पता चल गया कि नहीं आपका स्टेटमेंट गलत था तो सत्यम जी, once you have become a party voluntarily, then be ready for all the adverse consequences. Then be ready for all the adverse consequences. You are making a submission which is contrary to the petition, and specifically in your personal capacity. Had it been a case that you have mentioned in your writ petition, sir, that is an erroneous description, whereas it has been constructed over your plot only, then I can understand that you have explained it in the writ petition. There is not a single whisper in the writ petition. There is a specific averment in the representation made by you. Now you are giving a false explanation. I don't have any objection to that. Give a false explanation. मैं कल demarcation करा दूंगा, then अग्रवाल जी क्या होगा आपका? Are you ready to face the blunt? आप लोग मत पार्टी बना करें सर, मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. एनीहाउ, चलो आप इतने सीरियस क्यों हो गए स्माइलिंग फेस पे से? आज तो पहली बार देख रहा हूँ यार, हमेशा मुस्कुराने वाला आदमी अचानक सीरियस हो गया. अग्रवाल जी, सत्यम जी, मैं आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कहता हूँ, कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट को अपना बना के अपने मन से मत बोलिए. प्लीज मत बोलिए, बार-बार बोल रहा हूँ. डिमार्केशन में अगर आ गया फिर क्या होगा सर? फिर आपको जबरदस्ती माफी मांगनी पड़ेगी. तो एक लॉयर को ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं लाने देना चाहता. आप ही से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. चल हो गया सर.